am going to prepare mussel soup. So first we need tomato peel or blend tomatoes, vegetables, carrot and zucchini, garlic, onion chopped and celery, everything inside, salt and pepper, stock, vegetable stock and mussels. First we add olive oil. Then we add chopped onion, celery. And some garlic. Guys, onion, garlic, celery, we will saute almost 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, now we will add peeled tomato. And we will cook almost 10 to 15 minutes with cover. तो गाइस 15 मिनट हो गए हैं पील टमाटो को कुक करते हुए. आप देख सकते हैं the color very red. Now I am going to add mussels. So I am going to add mussels. And vegetable all together, mussels and vegetable all together. Stop. गाइस आपने देखा कि मैंने सब चीज़ें एक साथ इसमें डाल दी हैं. वेजिटेबल्स, मसल्स, स्टॉक एंड सॉल्ट एंड पेपर टुगेदर डाल दिया है. अब इसको मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कुक करूँगा. हाफ एन आवर के बाद ये सूप हमारा बन के रेडी होगा. तो आप तो हाफ एन आवर चेक करें. तो गाइस आफ्टर 30 से 40 मिनट सूप पकाने के बाद अब हम देखते हैं ऑलमोस्ट ये रेडी है. तो हम ट्राई करेंगे हाउ इज द टेस्ट ऑफ मसल सूप. गाइस हम थोड़ा पार्सली ऐड करेंगे और अब हम ट्राई करेंगे सूप को. Wow, unbelievable. Very nice taste, very nice texture. You can see
and it's really unbelievable. So guys, if you try this recipe, you will feel the taste, and I'm sure you're gonna like this recipe. If you really like the video, my recipe, please hit the like button and comment. And if you are new in my channel, please subscribe my channel. So in future, I will bring more recipes for you guys, and sure you're gonna like. And thank you very much for watching. Stay tuned.